a device which converts chemical energy into electrical energy is called as galvanic cell. So these concepts are over in 11th also. एग्जाम्पल के लिए आपके पास में डैनियल सेल है, Lickland cell है. All these are the devices or the arrangement that are used to convert that chemical energy into electrical energy. We can have the dry cell also, or we can have the fuel cells. And a nickel cadmium cell. All these are the devices where you are getting electrical energy, and that is obtained due to produces electrical energy due to spontaneous redox reaction. इसमें जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा. प्रीवियसली जो किया था हमने दैट वाज नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट वाज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे एनर्जी आपको सप्लाई करना था बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड देन केमिकल चेंजेस विल टेक्स प्लेस. यहाँ पे ऑटोमेटिकली होगा दैट इज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स reaction. It consists of two electrodes. इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. One that is एनोड, जहां पे आपका ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. यहाँ पे इसका पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव रहेगा. एनोड का जो पोलैरिटी है दैट विल बी अ नेगेटिव वन. और दूसरा होता है कैथोड, यहाँ पे रिडक्शन होगा और पोलैरिटी जो है इसका एग्जैक्टली उल्टा है. बिफोर दैट हमने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किया था, कंपैरेटिवली दिस इज अपोजिट. These half cells are connected together internally by using a salt bridge. तो यहाँ दो हाफ सेल है आपके पास में, एक एनोड और एक कैथोड, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, दैट इज योर कैथोड, जहां पे पोलैरिटी पॉजिटिव होगा. नाउ दीज टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड इंटरनली बाय यूजिंग अ सॉल्ट ब्रिज. अब जब हम एनोड और कैथोड को एक्सटर्नली बाय यूजिंग वायर्स कनेक्ट करेंगे, एंड अक्रॉस देम यू कैन हैव दैट स्मॉल बल्ब, or you can place a millimeter or a voltmeter or any other device that will show the effect of electricity that can be connected across these two electrodes. So you will find that that bulb will glow, or millimeter voltmeter shows some deflection, means there is a flow of current, and such a current is
due to the electrons which are released at the anode and that reaches to the cathode through the wires. वायर्स में से वो कैथोड तक जा रहा है, दैट इज एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करंट जो है दैट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, दैट इज अ कन्वेंशनल डायग्राम, सॉरी कन्वेंशनल direction of the current is from cathode to anode in case of galvanic cells. Now what is mean by electrode? Electrode क्या होता है? Metal rod placed in its salt solution. For example, see here, zinc rod is placed in ZnSO4 solution. So this is called as an electrode. You can have the copper also, metal and its salt solution. Aqueous है, 1 molar है. Now potential कहाँ से आता है? Now this is your electrode which is placed in the solution and that may be surrounded by the cations or anions. ठीक है, this is positive ion in the ZnSO4 solution and this is your zinc rod. तो यहाँ पे this zinc undergo oxidation, zinc का oxidation होगा by loss of electron, you can say. So electrons are released over this electrode. तो अब यहाँ पे हमारा positive ions give rise to electrical double layer, and such electrical double layer give rise to the electrode potential. Potential will be developed at the electrode due to oxidation or reduction, and in that case that will be called as electrode potential. The potential develop at the electrode. देखिए मैंने इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में लिखा है ELE, ODE, इलेक्ट्रोड को शॉर्ट में लिख दिया है. The potential develop at the electrode due to oxidation when it is placed. यहाँ पे दोनों एक साथ कर लो, oxidation or reduction. The potential develop at the electrode due to oxidation or reduction when it is placed in its salt solution is called as electrode potential. So potential developed at this electrode is due to either oxidation or due to reduction. Oxidation या reduction में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स जो है रिलीज होंगे, either electrons will be gained by that particular ions in the solution. So due to that electrical double layer will be formed and that will give rise to electrode potential. Yeah, some people are asked at 1:15 and some of them are joining at 12:30. 12:30 वाले अलग है, 1:15 वाले अलग रहेंगे, लेकिन 12:30 वाले कंटिन्यू करेंगे. Okay, so this is called as an electrode potential. Now next one is a standard electrode potential.
Now standard, once I say this standard, then some conditions of temperature and concentrations are required. So in that case, the potential may be due to oxidation or reduction, but that will be called as an electrode, standard electrode potential, जहां E0 मतलब एक standard लग जाएगा उसके ऊपर. The potential develop at the electrode, potential develop at the electrode वन मोलार सॉल्ट सोल्यूशन. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बताया हमने कि 1 मोलार सोल्यूशन होना चाहिए. दूसरा टेम्परेचर मेंशन कर दिया 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे. In that case, the potential developed at the electrode at 298 Kelvin when it is placed in its salt solution is called as standard electrode potential. That may be oxidation potential or reduction potential. दो में से एक ही होगा. Now next term is the standard oxidation potential, that is SOP. SOP, standard oxidation potential. यहाँ पे potential is due to oxidation process. ऑक्सीडेशन होगा. स्टैंडर्ड कंडीशंस आपने ऑलरेडी लगा दिया है. 298 केल्विन बोल रहे हैं, 1 मोलार सोल्यूशन बोल रहे हैं, और ऑक्सीडेशन यदि हो रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SOP, और आई कैन राइट E0 ऑक्सी. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और E0 ऑक्सी. ये क्या है? पोटेंशियल डेवलप ड्यू टू ऑक्सीडेशन. बस एक वर्ड ज्यादा आ गया आपका, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, when it is placed in its 1 molar salt solution at 298 Kelvin. This is standard oxidation potential. Next is standard reduction potential. Standard reduction potential. तो यहाँ पे potential develop at the electrode due to, यहाँ पे change होगा due to reduction when it is placed in its salt solution, 1 molar salt solution at 298 Kelvin, and in that case that will be called as SRP. So you can take down this. The potential developed at the electrode
ड्यू टू, बस एक सिंगल वर्ड चेंज करना था हमको, ड्यू टू रिडक्शन, जस्ट अ सिंगल वर्ड. When it is placed in its 1 molar salt solution at 298 Kelvin is called as SRP, standard reduction potential. The potential developed at the electrode due to reduction. Now since the oxidation and reductions are the opposite processes, ये दोनों एक दूसरे के opposite है, you can say E0 oxy is equal to, you can write minus E0 red, or you can write E0 red will be equal to मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल का साइन चेंज कर देते हैं तो वो प्रोसेस चेंज नहीं होता, सिर्फ पोटेंशियल को आपने माइनस साइन लगाया है, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस आर द अपोजिट प्रोसेसेस. E0 सेल. तो ये IUPAC के हिसाब से इसका डेफिनेशन है. एज पर द IUPAC norms or rules, you can have that reduction potentials of both the electrode. So in that case, you can have a difference of standard reduction potential of cathode and standard reduction potential of एनोड. दोनों का रिडक्शन लिया लेकिन यहाँ पे माइनस साइन कर दिया आपने. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड is called as E0 cell. ये माइनस साइन वाला यदि कंसीडर करेंगे तो दैट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट वी यूज ओनली दिस फॉर्मूला. इसमें एनोड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड विथ लोअर SRP वैल्यू. माइनस साइन के साथ उसका वैल्यू बहुत कम दिखेगा आपको. और कैथोड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोड विथ सो E0 सेल जो है दैट विल बी पॉजिटिव. ये हाइयर होगा ये लोअर होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. सो E0 सेल इज पॉजिटिव एंड सेल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस. जब स्पॉन्टेनियस बोला ही है हमने तो यू कैन हैव दैट minus delta G0 and in that case only the cell can supply electrical energy. सेल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी मिलेगा जब E0 सेल पॉजिटिव होगा और डेल्टा G0 नेगेटिव होगा. then and then only that cell can supply you the electrical energy.
we have that equation from thermodynamics. Delta G0 is equal to minus N F E0 cell. Minus N F E0 cell, where N is what? Number of electrons lost or gained at the electrode. F जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको बोलेंगे आप, जो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हो सकता है. नर्न्स इक्वेशन क्या है? NERNST नर्न्स इक्वेशन. So this is a mathematical equation that gives you the relation of this E0 cell with temperature and concentrations of the ions or the salt solution. तो वहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द सेल पोटेंशियल इज गिवन बाय नर्न्स इक्वेशन. द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड concentration of salt solution is given by Nernst equation. So इस हिसाब से किसी सेल का ऑर्डिनरी कंडीशंस में आप ई सेल निकालोगे, then E0 सेल माइनस log of Kc. Now ये यदि 25 डिग्री सेल्सियस है, ये तीन वैल्यूज आर टी और एफ में इसके अंदर रख दूं तो वी कैन हैव आर टी अपॉन एफ विल बिकम 0.0591. तो सिर्फ नीचे का एन अभी बैलेंस है. तो अभी हमारा ई सेल आ जाएगा माइनस ये जो है 2.303 RT अपॉन एफ. इसका हमने एक कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, आर रखा, टी रखा और एफ रखा. यू विल गेट दिस वन. सो 0.0591 डिवाइडेड बाय एन log of Kc. Now Kc क्या है? Kc is a equilibrium constant and given by concentrations of product ion
जोड़ के मत लिखना, प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट आयन, concentration of reactant ions। तो अब इसमें रखे नहीं रखे तो भी चलेगा, बट दैट विल बी ओवरऑल फॉर्मूला फॉर नॉन्स इक्वेशन। और n आपको मालूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are lost or gained during that reaction। Okay, is this over? State the relation between equilibrium constant। डेल्टा जी जीरो जो है वो है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इन ए गिवन सेल। Kc जो है that is equilibrium constant for a redox reaction। Kc जो है that will be equilibrium constant for the redox reaction। ये थर्मोडायनामिक्स से आ गया आपका। और दूसरा इक्वेशन है मेरे पास, so if you equate the left hand right hand side of these both, then minus sign will get cancelled, ठीक है ना। So from 1 and 2 we have that NFE0 cell that is equal to 2.303 RT log Kc। अभी E0 सेल क्या होगा, NF इसके नीचे आ गया, NF इसके नीचे आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू निकाला था इधर में, वो रख देंगे तो यू विल गेट दिस सेल पोटेंशियल E0 सेल।
अब आ जाएगा। इसकी जगह पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू लिख रहे हैं। E0 cell will be equal to 0.0591 by n log of Kc. ओके, पीछे का मिटाना है। All these electrodes are there, and these electrodes have the potentials. For example, see some of the electrodes like this. Standard electrode potentials is always in the form of SRPs. ये ऊपर का हो गया सब, यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना है इसको। For some electrodes, where that zinc, this one, तो इसका जो पोटेंशियल है वो है ऐसे, minus 0.76 volt. We have the copper, देखिए इसका प्लस है, इसका माइनस है। एल्यूमिनियम के लिए लेंगे हम minus 1.66 वोल्ट। हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं आप, तो दैट इज, लेकिन इसके आगे स्टैंडर्ड कंडीशन हट जाती है, तो 0.000 रहता है, उसके आगे 1 2 3 कुछ आ सकता, सो दैट्स व्हाई 0.000 इज इंपॉर्टेंट। नहीं तो 0.00 वोल्ट क्यों लिखा है, तो रीजन इज दैट, हेलो okay, is that over? आप बोला बस, अच्छा ठीक है ना, हो काही प्रॉब्लेम नाही। हा, तसंच तुम्ही ओबीसी मध्ये स्कॉलरशिप घेऊन 1.5-2 भरतोच आहे ना, काय ठीक है ना सर, कर देना, ठीक, ओके सर, ओके सर, ठीक। Is that over? Okay. now ये सारी जो वैल्यूज है आती कहाँ से है, इसको तो मेजर करना पड़ेगा कहीं से, इसको मेजर करना है हमको, तो दैट्स व्हाई यू नीड व्हाट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे कि आपके पास स्केल तो सभी के पास होती है, स्केल पे यहाँ 0 है, तो आप यहाँ से आगे मेजरमेंट करेंगे, सो दिस 0 इज योर रेफरेंस पॉइंट। ये 0 जो होता है यहाँ पे स्केल का इन द बिगिनिंग,
वो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है और ऑनवर्ड्स दैट यू नीड टू मेजर. So with respect to this point, this distance is either 5 or 6 or 10 centimeter, whatever it may be, but you need a reference. If 0 is not there on your scale, then you start with the 1, and from 1 to onward you measure the distance, but that is always not the correct, because उसका जो reference है आपने 1 centimeter आगे लिया है. So in that case, whatever be the measurement that needs some reference, with respect to that you always measure the things. सिमिलरली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करना है तो हमारा रेफरेंस पॉइंट ये है हाइड्रोजन. विथ रिस्पेक्ट टू दिस नीचे है तो माइनस में लिखा है, इसके ज्यादा है तो यू हैव टू राइट प्लस. सो दिस इज व्हाट रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अभी हमको सिर्फ इलेक्ट्रोड देखना है. इलेक्ट्रोड ऑफ विच potential is fixed, used to measure the potentials of other जिसका अपना पोटेंशियल फिक्स है और उसकी हेल्प लेके आप दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं. तो इन दैट केस दैट विल बी योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड. Electrode whose potential is fixed and used to measure the potentials of other electrodes is called as reference electrode. So रेफरेंस इलेक्ट्रोड में एक है हमारे पास में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड. Standard hydrogen gas electrode. It is used to measure the potentials of other electrodes. In short, that will be called as an SHE. Is a primary reference electrode and used to compare or measure the potentials of other electrodes. तो अब ये कैसे होता है? तो this is coupled with one of the electrode. ये जिंक है, जिंक के साथ इसको जोड़ेंगे, सेल बन जाएगा. सेल का पोटेंशियल हम इकट्ठा मेजर कर लेंगे, उसमें से हाइड्रोजन का कम कर देंगे, तो रिमेनिंग जो है दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड. सो दैट इज द टेक्निक. उसको तो बाद में देखेंगे, पहले SHE करना है आपको. So SHE is a primary reference electrode that is used to measure the potentials of other electrode. So ये जो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है that may acts as एनोड, that may acts as a cathode, whatever it may be, that depends on the direction of current. हम तो ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये एनोड है, ये कैथोड है. वहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट से हमको पता चलेगा कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है कौन सी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, मतलब कहाँ से आ रहा है. जहां से आ रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा और जहां जा रहा है वहां पे रिडक्शन होगा, राइट. So in this way we can identify the that oxidation or reduction processes or anode and cathode in that cell. Direction of current से हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, फ्रॉम जिंक टू कॉपर जा रहा है या कॉपर से एनोड आ रहा है. तो वहां से हमारे एनोड और कैथोड हम फिक्स करते हैं. So ये जो है is a primary reference electrode in which ऐसा कर दो इसको, in which a pure and dry H2 gas is passed over platinum placed in 1 molar
HCl सॉल्यूशन। सो देखिए व्हाट इज पूछते हैं, जनरली पूछना नहीं चाहिए व्हाट इज एसएचई, तो ऐसा पूछते हैं, या फिर डिफाइन एसएचई बोलते हैं, जबकि इसका कोई डेफिनेशन नहीं होता यार। दिस इज अ डिवाइस दैट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, तो उसको इसी ढंग से लिखना चाहिए कि भैया वो क्या है, ऐसे बताओ, डिफाइन क्या करेंगे। इसलिए मैंने ये लिखा है प्योर एंड ड्राई एचसीएल गैस, H2 gas is passed to that solution containing 1 molar HCl solution at 298 Kelvin। यहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। ओके ऊपर का रेफरेंस इलेक्ट्रोड वाला डेफिनेशन हटा दो, ये वाला। तो इसके अंदर हमको करना क्या है, H2 गैस जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस सोल्यूशन में से पास करना है, जिसमें आपने प्लेटिनम का एक छोटा सा टुकड़ा फॉइल डुबा के रखा हुआ है, उस पे हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन होगा और वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन विल टेक्स प्लेस, एंड इन दैट केस वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड और दैट इलेक्ट्रॉन्स विल कम ऑन दैट इलेक्ट्रोड and that will give rise to the potential. So that potential is negligibly very small, and that is considered to be 0.000 volt. कंस्ट्रक्शन ऑफ HE, तो यहाँ पे होगा आपका एक ग्लास जैकेट हैविंग इनलेट एट द टॉप। ये आपका ग्लास जैकेट है हैविंग इनलेट एट द टॉप। नाउ एट द सेंटर बीचों बीच इससे प्लेटिनम वायर फ्यूज्ड इन ए ग्लास ट्यूब। ठीक है, प्लेटिनम वायर की बात चल रही है। प्लेटिनम वायर फ्यूज्ड इन ए ग्लास ट्यूब, उसके अंदर है ये, तो is fitted. This is what a platinum wire fused in a glass tube. The lower end of this wire, इसका जो निचला हिस्सा है, that will carry a platinum foil. This is platinum foil attached to the lower end of this platinum wire. Then this whole arrangement is placed in 1 molar salt solution, means HCl लिया हमने यहाँ पे। ये ग्लास जैकेट यहाँ रेस्ट करेगा। That is placed in 1 molar HCl solution. So ये हमारा क्या है, एक छोटा सा ग्लास जैकेट। ये हमारा इनलेट है, यहाँ से प्योर एंड ड्राई H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से पास करेंगे आप। ऊपर का जो इनलेट है उसमें से प्योर एंड ड्राई H2 गैस इज टू बी पास, और यू कैन से इट इज बबल्ड through the solution containing 1 molar HCl. तो ये 1 molar salt solution. This is what platinum wire fused in a glass tube.
ये जो चीज यहाँ लटकी हुई दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज platinum foil. So this is the arrangement that can be called as an SHE. It consists of a glass jacket having inlet at the top to introduce pure and dry H2 gas at 1 atmospheric pressure. A platinum wire fused in a glass tube of which lower end carries a platinum foil is fitted inside the jacket, and then this whole arrangement is placed in 1 molar salt solution, so that this arrangement will be called as SHE, standard hydrogen electrode. So इससे और सिंप्लीफाइड डायग्राम मेरे पास में नहीं है, आप निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा मर्क्यूरी रखा हुआ है for electrical contact. This is a platinum wire fused in a glass tube, lower end of which carries a platinum foil. This is inlet for hydrogen gas to be passed. ये इसमें से अंदर आएगा और यहाँ पे उसका कलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, आप चाहते निकालना तो निकाल लो। Yes, do you want to draw this one? Yeah. ओके, तो कंस्ट्रक्शन लिखो मैं इस साइड में। ओके, यू कैन ड्रॉ दिस वन। 2 मिनट दे रहा हूँ। Shall I wipe this one? डायग्राम मिटा दूं? Okay, thank you. It consists of a glass jacket having inlet at the top pass हाइड्रोजन गैस। ग्लास जैकेट है, उसके ऊपर में एक इनलेट है जिसमें से आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे। प्लैटिनम वायर fused in a glass tube lower end of which carries a platinum foil. Which is also coated with platinum black and all that.
एज शोन इन द फिगर। फिगर आपने पहले ड्रॉ कर लिया है, फिगर पहले ड्रॉ किया और जैसे जैसे फिगर में मैंने बताया वही पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए। ठीक, अब इसमें कैसे वर्किंग कैसे होता है वो देखेंगे अभी। तो शैल आई वाइप दिस? Yes, sir. ओके, जब ऊपर से आप गैस पास करोगे तो वो सोल्यूशन में जाएगा। अब सोल्यूशन में क्या है, तो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस तो है ही, साथ में आपने प्लेटिनम रखा है, वहां पे आपका गैस एड्सॉर्ब होगा, कलेक्ट होगा ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। एड्सॉर्ब on platinum foil. There exists a equilibrium between H2 gas and H positive ions in the solution. And few electrons are released which gives negligibly a small potential. यहां से आगे कुछ फिगर्स रह सकते हैं, इसलिए हमको ये 3 डिजिट मेंशन करने हैं। और जो इक्विलिब्रियम है वो है आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे कर देते हैं और यू कैन हैव दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड देन हाफ H2। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिख रहा है, ये उल्टा भी हो सकता, रिवर्सिबल एरो है। सो दिस इज व्हाट हाफ सेल रिएक्शन। अब ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रोड और उसका पोटेंशियल। अब इसको हम जोड़ेंगे दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ में एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ सेल, बिकॉज जो सेल होता है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल, उसमें से एक हाफ सेल ये होगा आपका और दूसरा हाफ सेल रहेगा अननोन इलेक्ट्रोड। Is denoted as
ये प्लेटिनम वायर है, दिस इज हाइड्रोजन गैस दैट इज फॉर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट ओनली, एंड दिस H2 gas is in contact with 1 molar H positive ions, or you can say the HCl also. So this will be the symbolic representation of that electrode, single electrode का ये representation होगा. Platinum is used for electrical contact. Here is your hydrogen gas and this is H positive ions in 1 molar HCl solution. तो अब इस electrode को हम that can be used as oxidation half cell as well as reduction half cell. That depends on the nature of other electrode. जिसका potential हम measure करने के लिए ये सब कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसका आप प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं. That may be anode, that may be cathode. That depends on direction of current. Shall I wipe this one? Yes, ये मिटाना है. Yes, sir. Okay. Now, how this can be used to measure the potentials of other? ये मिटा दो सब अब. How that SHE, standard hydrogen electrode, so this is your how it is used to measure the potential of unknown electrode. Gandhi. Okay. बहुत ही बिजी लोग हैं हमारे, इतने बिजी लोग हैं कि कोई मतलब नहीं है, उनको पढ़ने नहीं है. The electrode of which potential is to be measured, potential is to be measured is coupled with SHE. It is coupled with SHE to form
form galvanic cell. एक सेल बन जाएगा, दोनों को हम these two electrodes are connected by using salt bridge. उसके बाद E0 सेल का वैल्यू आपको मिल जाएगा डायरेक्टली, सेल बन गया है तो मिल जाएगा. ये अननोन इलेक्ट्रोड है हमारा, ये SHE है. ये तो जीरो है आपका, ये SHE का जो पोटेंशियल है वो तो जीरो है. E0 SHE जो है वो जीरो है आपका, तो जीरो माइनस करेंगे तो माइनस आएगा. और यू कैन हैव E0 H2. ये माइनस कर देंगे तो ये प्लस भी आ सकता, माइनस भी आ सकता. दैट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड. That depends on nature of the other electrode. कि यहाँ रोकना पड़ेगा हमको, because